Assalamu alaikum. My name is Saman Aziz and I am here along with my group members Arij Ahmed and Bushra to present our final year project, Crime Prediction, a comparative analysis in random forest and LSTM. In this project, we aim to challenge the growing issues of crime using modern technologies like machine learning and deep learning. We implement multiple predictive models and compare their performance to find the most effective one for crime forecasting. Our objective is not only to build working system but also to provide insights that can help law enforcement make data-driven decisions. Let's begin with the introduction of our project. Crime rate is increasing and traditional methods are not enough. Machine learning and deep learning being new solutions. Random forest is strong ML model, while LSTM is powerful deep learning model. Both have strengths. रैंडम फॉरेस्ट इज हैंडलिंग स्ट्रक्चर डाटा LSTM is sequential data. हमने इन दोनों मॉडल्स को ट्रेन और एवोल्यूट किया यूजिंग क्राइम डाटा सेट. The project aimed to select the most effective and accurate model. We bring innovations by using predictive analysis, then problem statement. Traditional crime analysis technologies are not scalable. They fail to identify complex patterns in large dataset. Poor prediction means delayed law enforcement response. ये मेथड डाटा की डेप्थ को सही से एनालाइज नहीं करते. There is a need for intelligent system that can predict accurately. हमारी अप्रोच बेटर प्रिडिक्शंस और रिस्पॉन्सेज एलोकेशंस में हेल्प करेगी. स्केलेबिलिटी और स्पीड इस प्रोजेक्ट की मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं. Our system aim to fill these gaps effectively. Then proposed solution. We implement and tested 5 models: random forest, LSTM, MLP, KNN, and ensemble learning. Each model we train using real-world crime dataset. Random forest give good accuracy and it easy to interrupt. LSTM learn from time-based sequence, making it useful for trends. Hyperparameter training improve किया गया to optimize result. हर model evaluate किया गया using accuracy, precious recall and effort score. कंपैरिजन से ये समझने में हमें हेल्प मिलती है कि कौन सा मॉडल बेस्ट परफॉर्म हो रहा है. The best performing model can be used to practical crime systems. Now, the benchmark table compare 5 models: random forest, LSTM, MLP, KNN, and the proposed voting ensemble. SRO 7 key features for crime prediction. The model proposed voting sample excel in most areas, supporting real-time predictions, multi-crime detections, visual crime hotspot, and easy-to-use dashboard. Confidence scores and handling large cities. However, it lags in fast processing compared to random forest, MLP, and KNN. Random forest and MLP perform well overall, while LSTM and KNN slow limitations, particularly in real-time predictions, visualization, and dashboard usability. The ensemble combines strength but trades off some speed for enhanced functionality. This makes it robust choice for comprehensive crime prediction system. Then the objectives and goals: implement random forest and LSTM for crime forecasting, processing data to remove noise, evaluate model performance using multiple matrices, recommend the best model for law enforcement use. Now the project features include model implement and detail evaluation. हमने मिसिंग वैल्यूज और आउटलाइंस को हैंडल किया प्री प्रोसेसिंग के जरिए. मैट्रिसेस जैसे एक्यूरेसी, प्रीशियस रिकॉल को यूज किया गया परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए. रिजल्ट विजुअलाइज किया यूजिंग ग्राफ्स एंड टेबल्स. आवर सिस्टम कैन स्केल to handle bigger dataset. User-friendly design make it easy to understand for non-technical stakeholders. It built with both functionality and flexibility in mind. Now this is the workflow diagram. First we collect the data, gather crime records, location, time and other detail. Then data preprocessing, clean and organize data for analysis. Model training, train algorithms like random forest and LSTM on the data. Testing check model accuracy with unseen data. Performance compare models and pick the best one. Now move to the next slide. Stakeholders, law enforcement agencies for proactive crime handling, policymaker for better data decisions, researcher to extend model comparison, data science community as reference model, public we benefit for improved safety. ये सब stakeholders इस project की outcomes को real world में apply कर सकते हैं. Now, functional requirements of our project: data preprocessing, handle missing data, outliers, encoding, train करना मॉडल को, evaluate करना उनकी performance using standard matrices,
visualize result in graph for clear understanding, compare result across both models. Non-functional requirements, performance, scalability, usability, security, and reliability. They support user trust and system performance. Now in constraints हमने कुछ limitations face की. Data set limited था in quality and size. LSTM को ज़्यादा computational power चाहिए होती है. Training time भी LSTM से ज़्यादा होता है. Interpretability, random forest model is easier to explain than LSTM. Now functional classification, data processing include cleaning and encoding, training and implement of random forest and LSTM models, and other evolution of models using matrices like reciprocous recall, F1 score, visualization of result through graphs and tables, comparative analysis of random forest and LSTM performance. Now crime prediction use case diagram. This model outlines the interaction between admins and end user with the crime prediction system. Admins upload crime data with the system preprocessing before training predictive models like random forest and LSTM. They also monitor model performance and matrices. End user can request prediction by providing location input, promoting the system to generate result. Both admins and end user can view these results and insights through the system interface. The workflow demonstrates a complete cycle from data to actionable crime predictions, facilitating both backend management and front-end usability. This structure ensures efficient collaboration between system operation while maintaining data-driven decision-making. Methodology: crime data collect किया based on types, time and location. Dataset clean किया processing step में. Random forest and LSTM model develop और train किए, evaluate किया using precious recall, F1 score, visualize किया result to find the best model. Now this is the timeline of our project. नवंबर से दिसंबर में हमने डाटा को कलेक्ट किया. दिसंबर से फेब में हमने प्रोसेसिंग पे काम किया. फेब से मार्च में हमने रैंडम फॉरेस्ट पे काम किया. और मार्च से मई में हमने LSTM मॉडल पे काम किया. देन इसके बाद हमने मॉडल्स को एवोल्यूट किया. और जून से जुलाई में हमने फ्रंट एंड पे काम किया. There's some tools and technologies, programming language like Python, HTML, CSS libraries like sklearn, pandas, matplotlib, platform Google Colab for model training with GPU support, visualization tool, matplotlib, Seaborn. There is some references. We refer to the following papers for research support. Now this is the backend of our project. Import libraries. We start by importing libraries like pandas, numpy, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, sklearn, keras. ये लाइब्रेरीज हमें हेल्प करती हैं कि डाटा को प्रोसेस कैसे करेंगे, विजुअलाइज करेंगे और मॉडल कैसे अच्छा बनाएंगे. दिस स्टेप इंश्योर ऑल टूल्स एंड रेडी फॉर पाइपलाइन. डाटा कलेक्शन एंड इनिशियल अंडरस्टैंडिंग. लोडिंग द डाटासेट को CSV फॉर्मेट में लोड किया using pandas. This crime dataset include information like crime types, location and time. Initial data inspection, we checked shape, कॉलम नेम्स एंड नल वैल्यूज. ये स्टेप हमें आइडिया देता है डाटा के स्ट्रक्चर और प्रॉब्लम्स के बारे में. सिक्योरिटी डाटा एनालिसिस में हमें ग्राफ्स और प्लॉट को अंडरस्टैंड किया इन क्राइम पैटर्न्स, विजुअलाइज लाइक बार चार्ट, हीट मैप. दिस हेल्प अस स्पॉट ट्रेंड्स, imbalance and correlation in data. Then data pre-processing and feature engineering, clean and reduce the data. That means missing value remove किए, fill किए, and unwanted columns को drop किया. In sample categorical feature like crime type को numbers में convert किया using encoding. Handling imbalance target, rare crime categories को combine किया to avoid class imbalance issues. Encode target variables भी encode किए to numeric labels. This step is key for classification algorithm. Train, test and slip. Data को train और test set में slipped किया. Then scaling applied to normalize the feature. Then model evolution, train individual models. We train multiple models like random forest, LSTM, MLP, and KNN. Create a hard voting in sample. Different models की prediction combine की using in sample learning. LSTM model training and evolution. In this section, we implement and train LSTM model using processed data. LSTM is deep learning model.
ideals for sequential and time based data like crime patterns. एवोल्यूशन फंक्शन इन दिस सेक्शन हमने एक कॉमन एवोल्यूशन फंक्शन बनाया जो हर मॉडल्स के लिए चूज होता है। ये फंक्शन कैलकुलेशन करता है मैट्रिसेस लाइक एक्यूरेसी प्रीशियस रिकॉल एवं स्कोर। एवोल्यूशन इस स्टेप में हमने सब मॉडल्स को टेस्ट डाटा पे एवोल्यूट किया यूजिंग कॉमन एवोल्यूशन मॉडल्स। मॉडल्स इंक्लूड रैंडम फॉरेस्ट, MLP and KNN. Ensemble voting models also include advanced model evolution matrices, accuracy, precious, recall, F1 comparison chart. ROC curve, that means receiver operating characteristics. Curve evaluate करता है मॉडल की क्लासिफिकेशन कैपेबिलिटीज. इट प्लॉट ट्रू पॉजिटिव रेट वर्सेस फॉल्स पॉजिटिव रेट फॉर डिफरेंट थ्रेशोल्ड्स. AUC एरिया अंडर कर्व, जितना ज़्यादा होगा मॉडल उतना अच्छा होगा. हमने सब मॉडल्स का ROC कर्व प्लॉट किया और कंपेयर किया उनकी AUC वैल्यूज से. ये मैट्रिक्स स्पेशली इम्पोर्टेंट होती है जब क्लास इम्बैलेंस हो. ROC कर्व विजुअल वे में शो करता है हाउ कॉन्फिडेंटली मॉडल डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन क्लासेस. इससे हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है मॉडल रिलायबिलिटी की. इट एड डेप्थ ऑफ आवर परफॉर्मेंस एनालिसिस. Now, this is the front end of our project. This is the code I can run. This is the local link. Control plus click. This is the home page. Then हम predictor पे जाएंगे. Then predictor पे जाएंगे. यहाँ location ऐड करेंगे. Time, date, district. Data insights. Top 15 most frequent crime types. मतलब हमारे पास top 15 crime types कौन कौन सी हैं. इसमें हमारे पास क्राइम बाय हॉर्स ऑफ द डे भी है, क्राइम बाय मंथ है. इसके अलावा इसके पास हमारे पास अरेस्टेड एंड नॉन अरेस्टेड क्राइम्स हैं, डोमेस्टिक एंड नॉन डोमेस्टिक क्राइम्स हैं. मॉडल्स पे चले जाएंगे कि हमने कौन कौन से मॉडल्स यूज़ किए हैं. हमने रैंडम फॉरेस्ट को यूज़ किया है, हमने MLP को यूज़ किया है, हमने LSTM को यूज़ किया है और एंड पे हमारे पास फाइनल रिजल्ट किससे आएगा, इंसेम्बल मॉडल से. और यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट मेथडोलॉजीज और रिजल्ट होंगे. हमारे मॉडल की एक्यूरेसी 0.9969 है. प्रीशियस रिकॉल F1 स्कोर. मॉडल एवोल्यूशन विजुअल, मॉडल कंपैरिजन, ROC कर्व एनालिसिस. थैंक यू सो मच. आई होप कि आपको मेरे प्रोजेक्ट की समझ आ गई होगी. अल्लाह हाफिज़.